All right, so we're live. Hello and good afternoon, everybody. Welcome to the Astrobiology Symposium organized by the Precision Medicine Lab. We're celebrating World Space Week here at our lab. We're a very diverse group of researchers, and now we have a growing group of young students and researchers around astrobiology. We have conducted some lunar and Martian research studies using bioinformatics and our wet lab. One such study was on Martian soil, and two projects using NASA Gene Lab's data are currently going on. More about these talks in our three lightning talks that will follow our keynote. If any one of you is interested in this kind of stuff, please reach out. We are actively looking for more students. Our keynote for today is Dr. Nozair Khwaja. We're very thankful to him for joining us. Dr. Nozair completed his PhD in geosciences and master in astronomy and in space science. Dr. Khwaja is a planetary scientist at Free University Berlin, Germany, and is the founder of Astrobiology Network of Pakistan. He did his research on life beyond Earth and has now become a leading researcher on many space exploring programs within our solar system. In 2019, he got a Group Achievement Award for Cassini's Cosmic Dust Analyzer from National Aeronautics and Space Administration, NASA. I'll encourage everyone to drop any questions that they might have in the comment section, and we'll try to entertain as many as we can towards the end of Dr. Nozair's talk. So thank you for joining us, Dr. Nozair. I'll request you to kindly share your screen. Thank you very much, Shahram Khan. Can you see the screen now? Yes, we can see it. All right. So just let me know when I should start. Yeah, you're good to start, please. Okay, thank you very much, Shahram Khan and Bhazad, for such invitation on such an exciting event. And I do appreciate that you guys are really doing amazing to introduce astrobiology in Pakistan and putting your efforts together. So I will go through quickly in this talk to give you another perspective of astrobiology. Maybe some of you would already know that. Maybe for some of you, would it be maybe the new things? But I will give you a perspective and especially focus on the things where I normally focus on. My research is, and I will use, let's say, both languages, sometime in Urdu, sometime in English, so that to make it as best as possible to the understandable level for the audiences. So I will take you through about astrobiology, and the question is that what is astrobiology? And there is only mainly one question when we talk about astrobiology. Of course, when you say astrobiology, it means that you are combining two words, astro and biology. In general, this is a typical term. And this typical term means that you are looking for life in the universe, in the astro, in the cosmos. So that is where astrobiology comes in. And it's a very diverse field, I will let you know during this presentation. So right now you just focus that there is only one question that normally we are really exciting, not only now, but from the past years, whenever the humanity came into being and we started looking into the sky, that whether we are just alone in this universe, on this earth, in this cosmos, or there is something else, someone else. So to address this question here, maybe it is interesting for you guys that to understand that this astrobiology is actually the unification of different scientific disciplines. You can see that during the time of this presentation that astrobiology not only has a
has its own grounds, but actually it's a merger of chemistry, bio, physics, astronomy, geology, information technology, mathematics. So from wherever you are, जो भी आपकी फील्ड है, जिस फील्ड से भी आप बिलोंग करते हैं, you can really play a role. You can really jump into the subject of astrobiology to do your research, to contribute to find the life in the universe. तो ये जो एस्ट्रोबायोलॉजी है, ये सिर्फ फाइंडिंग लाइफ ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ भी है. इसके अलावा हम कैसे स्पेस में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं, इस बारे में भी है. और ये इस बारे में भी है कि लाइफ इवेंचुअली स्टार्ट कैसे हुई थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है. तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं. दिस इज अनदर स्लाइड वेयर यू कैन लुक दैट कि जियोलॉजी, केमिस्ट्री, engineering, biology, physics, astronomy, they all together join hands in this multidisciplinary field, which we call as astrobiology. For what reasons? Because we would like to address the question of life. And this is quite amazing for such guys who really would like to do interdisciplinary science. This is another slide that you can see on the left side. If I take the laser pointer, yeah, on this side you can see that how with the emergence of universe and the planetary systems and how these planets formed, and eventually you get the pre-periodic chemistry and you get the environment where the chemistry and biology could grow up, and eventually you have the evolution of life and its complexity. तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो हमारी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए हमें ये देखना है कि हम कौन कौन सा डिसिप्लिन, कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, जिन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम फाइनली जो हमारा वन गोल है कि क्या लाइफ मुमकिन है कहीं और इस यूनिवर्स में, तो उस रिजल्ट तक हम पहुंच सकें. तो पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स कैन प्ले अ रोल एंड इट्स अ ह्यूज फील्ड. तो यहाँ पे मैं ये भी फोकस करना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओनली द साइंस which address the astrobiology. It's also other disciplines, for example, social sciences, for example, psychology, for example, theology. And this is just one example where I have presented I have given a presentation where I would like to address that what is the Islamic perspective on extraterrestrial life. And there were many scientists, many theologists in Berlin who get together to address this question, and where I got the opportunity to present the Islamic perspective here and how the Muslim societies perceive this subject. So I just wanted to focus that the astrobiology has a huge potential. So now just come back with, after this introduction of astrobiology, just come back that the question which mainly astrobiology addresses, are we alone in this universe? And it's a binary question, whether you say yes or you say no. Of course, you can also say that we don't know, but certainly yes or no, eventually we will reach to the conclusion in future. And when you look for life, then you look at the sky. You could also look within the solar system. When I say in the sky, then normally I refer to the other galaxies or other solar systems. Similarly, you can look life within the solar systems. We have a planet Earth, but there are many other planets, many other bodies within the solar system, जहाँ पे life को ढूंढा जाना चाहिए. But then wherever you look, even in the far reaches in the solar systems, other solar systems, or within the solar system, you have to compare it with your own life. So this is a reflection of life on planet Earth. So there must be an analog where you can relate your results with whatever you have seen in other galaxies, other solar systems, and within your own solar system. लेकिन इस जगह पे मैं आपको ये रिलेट करना चाहूँगा कि इस पूरी टॉक के दरमियान मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग जो हैं वो विद इन द सोलर सिस्टम सर्च फॉर लाइफ या डिटेक्शन फॉर लाइफ का जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करें. तो as I shown here in the end of message,
that detecting extraterrestrial life within our solar system. So this is the main idea of this talk, that can provide you that how the research is happening there, how different kinds of research are going on. But I will focus really on one aspect of astrobiology, or one aspect of detecting life within the solar system. This is a cosmic journey. You can see that all these lines, this is your Earth, and these are your planets. And you can see that all these lines represents that there are so many uh, space missions, space explorations has been done, not only to the planets, but also to the moons of other planets, as well as to the comets and asteroids. So we are really exploring each corner of our, trying to explore each corner of the solar system, because this is the model that we have in the universe. And if we are able to find the life elsewhere other than Earth within our solar system, on other planets, or on the moons of other planets, then this will really change the shape of, not only the shape of the humanity, but also uh, the future prospects of all humans who live on Earth. So you can see that there are many solar systems, and what these you can see there are many solar system missions within the solar system that have been launched so far. And when you send space mission, so normally I call it in a broader aspect, what you are looking for. Generally, you study for planets, you study for environments, you study for atmospheres. But what is the overall goal? What is this curiosity for which you really explore other planets and other moons? So I think that there is only one curiosity that all humans carry, and that is, एज आई सेड अर्लियर, कि वो लाइफ को ढूंढना है, कि हमने लाइफ वहाँ पर है या नहीं है. इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. और एज आई सेड कि ये बिल्कुल हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो चेंज कर देगा. तो जब कभी भी हम कोई स्पेस मिशन डिसाइड करते हैं लाइफ को ढूंढने के लिए, तो हम आमतौर पर तीन चीज़ों को देखते हैं, जिनमें से एक है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो क्या केमिस्ट्री है जिससे लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है. दीज आर द स्नॉप्स. Snobs mean carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur. So these are the most fundamental ingredients or the building blocks of life. As well as we need some energy sources. Of course, we need some reactions, and for reactions, we need energy source. And then we need the medium. Reaction ऐसे ही नहीं हो जाता. Reactions chemistry को करने के लिए definitely you need a medium. And here I took the standard as a liquid water. हम जानते हैं कि ज़रूरी नहीं कि लिक्विड वाटर ही मीडियम हो जहाँ पे रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन हम जब लाइफ को देखते हैं एज वी नो इट, तो मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो हमें पता है कि वो वाटर बेस्ड है. तो इसलिए जब हम इस तरह की लाइफ को ढूंढना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जितने प्लैनेट्स हैं, ये समझें कि ये स्टार्स हैं ऑन द लेफ्ट साइड, और ये दरमियान में हमारा सन है. ठीक है, और ये सारे प्लैनेट्स हैं जो कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं. एंड यू नो दैट हियर इज अवर अर्थ. और ये जो हमारी अर्थ है, यही एक ऐसा प्लैनेट जिसे अभी तक हम जानते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है अपने सन से, जिसकी वजह से इसके ऊपर ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं और ऐसा मीडियम मौजूद है जहाँ पे लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाई है, ओरिजिनेट हो पाई है और सस्टेन कर पाई है अभी तक. तो इसको हम हैबिटेबल जोन कहते हैं. आपने सुना होगा गोल्डी लॉक एंड थ्री बियर्स. तो वो जो स्टोरी है उसमें क्या होता है कि वो जो लड़की है वो ये देखना चाहती है कि मेरे रूम में हर चीज परफेक्शन के साथ पड़ी रहे. तो आप ये समझें कि ये जो हैबिटेबल जोन है, ये एक ऐसा एरिया विद इन द सोलर सिस्टम जहां पर जिंदगी जो है वो मौजूद है. तो अगर यहाँ पर जिंदगी मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि इसके नेबरहुड में जिंदगी के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं. तो नेबरहुड जो अर्थ का है वो वीनस है और मार्स है. तो ये दोनों प्लैनेट्स पे हम सोच सकते हैं कि अगर जमीन पर जिंदगी है, तो ये एक एक सवाल जहन में आना चाहिए, तो जिंदगी वहां पर क्यों नहीं है. तो तब हमें कुछ चीज़ों के आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल सकते हैं. हो सकता है कि हम ये कहें कि ये इसलिए है कि ये सूरज से बहुत करीब है वीनस, जिसकी वजह से
बाय द टाइम वहाँ पे लाइफ जो है वो फाइनली, हो सकता है कि पहले वक्तों में लाइफ हो, लेकिन देन इट्स गॉन. सिमिलरली वी नो दैट द मार्स is the golden sparrow, I would say, in astrobiology and in search for extraterrestrial, कि जहाँ पर लाइफ जो है उसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मिशंस ना सिर्फ भेजे गए हैं, बल्कि एज 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 शराम खान जस्ट सेड दैट प्रिसियन लैब के अंदर भी आप लोग जो हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कि मार्शियन सॉइल से रिलेटेड हैं. तो बहुत ज़्यादा रिसर्च यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बहुत अर्ली टाइम्स में इसका एटमॉस्फेयर ऐसा हो जहाँ पे लाइफ के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों. तो जब हम लाइफ की बात करते हैं, तो इस स्लाइड पे आप देखें कि लाइफ की मुख्तलिफ फॉर्म्स यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दी हैं. डीएनए है, जैसे ह्यूमन लाइक है, माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स हैं जो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. ऐसे ऐसे माइक्रोब्स जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन नहीं गुजारा कर सकते. लेकिन सवाल ये है कि ये तो वो लाइफ है जिस लाइफ को हम अर्थ के ऊपर जानते हैं, मुख्तलिफ तरह की. तो लेकिन ये राइट लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है कि ये तो वो है जिसको हम किसी ना किसी सेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम उसको देखें तो. लेकिन लाइफ ऐसे भी तो हो सकती है कि जिसको हम जानते ही ना हो, यानी लाइफ हो बट वी डोंट नो कि ये लाइफ है या नहीं है. तो इसका मतलब है कि देयर इज वेरी लाइकली कि देयर इज अ सेकंड जेनेसिस ऑफ लाइफ, देयर आर एक्सट्रीमली डिफरेंट कंडीशंस. अभी हम जब मार्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वहां पे अर्थ जैसी कंडीशन रही होंगी, तो देन पॉसिबिलिटी है कि वहां पे लाइफ उसकी सॉइल के नीचे जो है वो अवेलेबल हो. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पे कंडीशन, कुछ जगह ऐसी हो जहां पे कंडीशंस ही डिफरेंट हो, तो वहां पर हमें ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए ऑल द टाइम कि मे बी लाइफ वर्जन 2 भी अवेलेबल हो, और उसके लिए एक अलग स्ट्रगल की जरूरत है, सर्च की जरूरत है. तो ये जो मैं फिगर आपको लास्ट टाइम दिखाई है कुछ स्लाइड्स पीछे, तो आप ये देखें कि डिफरेंट प्लैनेट्स हैं. तो मैं अभी दोबारा से रिवर्स जा रहा हूँ उस फिगर के ऊपर कि अभी तक हम ये समझते थे कि इन एरियाज में, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस एरिया तक हम सोच सकते थे कि सूरज से इतने फासले पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है. मार्स, आफ्टर आफ्टर अर्थ, मार्स इज द सेकंड टारगेट जिसको हम कहते थे कि हम लाइफ को वहां पे ढूंढ सकते हैं, या हम वहां पे कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं अंडर सर्टेन एनवायरनमेंट्स के जहां पे हम इंसानों को आबाद कर सकें. लेकिन ये दूर के जो प्लैनेट्स हैं, तो ये पर्सपेक्टिव मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बिल्कुल न्यू पर्सपेक्टिव है साइंस की दुनिया में, जो कि जस्ट 15 से 20 साल 25 साल पहले की ये बात है. उससे पहले तक हम इसको डेड जोन कहते थे. डेड जोन इन ए सेंस कि ये बिल्कुल कोल्डी आइसी ऑफ बॉडीज हैं और यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आइस है. और लेकिन इस एरिया में बाद में आने वाले स्पेस मिशंस ने ये देखा कि यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके कुछ मून्स ऐसे हैं जहाँ पे हैरत अंगेज तौर पर पानी के समंदर हैं, और वो पानी के समंदर का वहां पर होना, इट्स अ ह्यूज साइंस, इट्स अ ह्यूज साइन कि अच्छा अगर पानी वहां पर है तो देन देयर इज अ लाइकलीहुड कि वहां पे लाइफ मुमकिन हो सकती है. एज वी नो दैट द फेमस मंत्रा दैट इफ वी वांट टू सी द लाइफ देन फॉलो द वाटर. सो पानी को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ के सतह के नीचे हमें समंदर मौजूद हैं. तो सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये भी बताना चाहूँगा इस टॉक में, ब्रीफ टॉक में, कि हम लाइफ को डिटेक्ट कैसे करते हैं. अगर लाइफ वहाँ पर हुई तो हम उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं. तो ये भी एक क्वेश्चन है सोचने का. तो लाइफ की डिटेक्शन मुख्तलिफ तरह से हो सकती है, लेकिन जब हम स्पेस मिशंस को भेजते हैं तो उसमें हम मैग्नेटोमीटर यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ तरह के इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो मिट्टी और बर्फ़ के छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, आइस ग्रेन्स हैं, डस्ट ग्रेन्स हैं, जो कि यूनिवर्स में फैले हुए हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में, अक्रॉस द सोलर सिस्टम हैं, वहाँ पर भी
एक्चुअली ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि मैसेंजर्स हैं, जो कि अक्रॉस द यूनिवर्स, अक्रॉस द सोलर सिस्टम ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेके ट्रेवल करते हैं जिनसे हमें लाइफ का पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे ये एक कॉमेट है, इसके अंदर से आप देखें कितनी तेजी से मटेरियल बाहर को निकल रहा है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये एक एस्ट्रॉयड है जिसकी सरफेस के ऊपर नमक है, और इसकी सरफेस के ऊपर जब माइक्रोमीटियोराइट्स बम्बार्ड करते हैं तो यहाँ से मटेरियल इजेक्टा की शक्ल में, डस्ट पार्टिकल्स की शक्ल में बाहर निकलता है। ये एक फेटॉन, ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि ज़मीन के ऊपर इसकी वजह से कहा जाता है कि दिसंबर के महीने में शहाब साकिब जिसे हम कहते हैं, मीटियोर्स जिसे कहते हैं, वो आते हैं, वो गिरते हैं। और ये एक आइसी मून है जिसको हम एनसेलेडस कहते हैं। तो आप ये देखें कि उसके एक साइड से कितने ज़्यादा फाउंटेन्स, गाइजर्स पानी के जो है वो निकल रहे हैं। तो दीज आर द सोर्सेज विद इन आवर सोलर सिस्टम। तो मैं अपनी टॉक को कन्वर्ज करते हुए इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ जो मेरी एक्सपर्टीज हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 15-20 साल पहले कोई नहीं जानता था, 25 साल पहले कोई नहीं जानता था कि जमीन के अलावा भी पानी के समंदर कहीं हो सकते हैं। देन वी फाउंड कि सैटर्न एक जो प्लैनेट है और जुपिटर एक जो प्लैनेट है, जो कि बहुत बड़े गैसियस प्लैनेट्स हैं, इनके जो मून्स हैं, फॉर एग्जांपल एनसेलेडस एंड टाइटन, और दूसरी तरफ कालिस्टो, यूरोपा एंड गैमेनीड, इनके जो मून्स हैं, उनकी सतह के नीचे, सरफेस तो आइसी है लेकिन सरफेस के नीचे वहां पे लिक्विड वाटर है, ओशंस हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे जमीन के ऊपर जो समंदर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था जिसके बारे में पता चला, तो हमारे होप जो हैं वो बढ़ गए कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर लाइफ भी मुमकिन हो सकती है। तो इसमें मैं दो मून्स का एक्सक्लूसिवली जिक्र करूंगा। एक यूरोपा है जो कि जुपिटर का मून है, और दूसरा सैटर्न का मून एनसेलेडस है। यानी जब आप एस्ट्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, जब आप लाइफ ढूंढने की बात करते हैं, तो ये याद रखिए कि आइसी मून्स एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओशंस, यानी जमीन के अलावा ओशंस जो हैं वो बहुत प्राइम और पोटेंशियल एम हैं उनको एक्सप्लोर करना लाइफ को ढूंढने के लिए। तो ये दो बॉडीज जो हैं वो इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग बॉडीज समझी जाती हैं। और इनमें मैं एनसेलेडस के बारे में आपको बताता चलूं कि ये आपका प्लेनेट सैटर्न है, ठीक है। इस प्लेनेट के अंदर आप देखें तो इसके इर्द गिर्द रिंग्स नजर आते हैं हमें, और ये रिंग्स क्या हैं? दीज आर द स्टोनी रिंग्स, आइसी स्टोनी रिंग्स, यानी आइस ग्रेन्स हैं और छोटी छोटी पत्थर की चट्टानें हैं जो कि आइस से लिपटी हुई हैं, और वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं। लेकिन आप ये देखें, ये एक बहुत बड़ा रिंग आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एक डिफ्यूज्ड रिंग है, बहुत माइक्रोन लेवल के पार्टिकल्स हैं आइस ग्रेन्स के। और ये निकल रहे कहाँ से हैं? ये आप नन्हा सा चांद देखें यहाँ पे, जिसका नाम एनसेलेडस है। तो एनसेलेडस के अंदर से वो पानी के फव्वारों की शक्ल में ये चीज निकल रही है, और वो फिर इस पूरे सिस्टम के अंदर फैल रही है। मिसाल के तौर पर ये इमेज आप देखें कि कैसिनी एक स्पेसक्राफ्ट था, जो स्पेसक्राफ्ट वहां पर भेजा गया, और उसने ट्रिमेंडस वर्क किया, और उसने इस मून के साउथ पोल से निकलने वाले फवारे जो हैं पानी के, ये जब पानी होगा तो बाहर का टेम्परेचर तो कोल्ड होगा, तो ये फौरन आइस ग्रेन्स बन जाते हैं, और ये आइस ग्रेन्स की शक्ल में फिर वहां पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये आइस ग्रेन्स अपने साथ कैसा मटेरियल लेकर आ रहे होंगे। हो सकता है कि उस मटेरियल में माइक्रोबियल लाइफ भी हो, और दैट्स व्हाई एनसेलेडस इज अ प्राइम ऑब्जेक्ट फॉर सर्चिंग लाइफ। ये एक अदर फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि इस इमेज में इसके अंदर से गाइजर्स निकल रहे हैं, और ये गाइजर्स क्या करते हैं? ये रिंग बनाते हैं। ये देखें इस इमेज में, ये उस प्लेनेट सैटर्न का रिंग है जो कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो दिस इज वेरी एक्साइटिंग थिंग। और एट द सेम टाइम आपको ये बताता चलूं कि ये ओरिजिनल इमेज है जो कि सैटेलाइट से ली गई, जो स्पेसक्राफ्ट से ली गई, और आप ये देखें कि ये एक्टिविटी चल रही है इस मून के साउथ पोल से, और जिस जगह से ये एक्टिविटी है वो इस तरह के 4 फ्रैक्चर्स हैं। यानी इस मून की साउथ पोल के ऊपर 4 टाइगर स्ट्राइप्स की तरह, एक चीते की खाल के ऊपर जैसे लाइनें होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये एक फ्रैक्चर्स हैं जहां से ये वाले फाउंटेन्स निकल रहे हैं।
और जिनको हमारे स्पेसक्राफ्ट ने डिटेक्ट किया था। तो हमारे स्पेसक्राफ्ट पे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट था। वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता था कि जब इस प्लूम से गुजरता था तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको वो कैच करता था। बहुत स्पीड के साथ वो पार्टिकल्स एंटर होते थे, और जब वो एंटर होते थे तो उसके बाद जो आपकी लैब है, डेफिनेटली आप लोग केमिस्ट्री और बायो को जानते हैं, तो क्या होता था कि वो इतनी स्पीड के साथ वो आइस ग्रेन इसके ऊपर हिट करता था कि जिसकी मदद से इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी जो कंपोजिशन है, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में डिवाइड हो जाती थी। और वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं वो इस मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ आते थे, जो हम डिटेक्ट करते थे, और फिर हम उसकी कंपोजिशन बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रम। And this is widely used in chemistry and biology. Um, so I would not go into deep into this topic. I mean, for mass spectrometry, but just to let you know. और ये आप देख रहे हैं दूसरी तरफ कि ये वो इंस्ट्रूमेंट था जो अपनी असल हालत में था और जो स्पेसक्राफ्ट के ऊपर था, और इसकी इस ओपनिंग में जो आपको नजर आ रही है, यहाँ से आइस ग्रेन इसके अंदर हिट करते थे। तो जब आइस ग्रेन्स हिट करते थे और जब हमने एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि उस चांद के अंदर और उसी तरह के दूसरे जो चांद हैं उनके अंदर जो उसका कोर है वो रॉकी कोर है। और वो रॉकी कोर कैसा है कि जिसके अंदर समंदर का पानी जा रहा है और वहां पे बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में ऐन मुमकिन है कि वहां पे उसी तरह की लाइफ फॉर्म होती हो जैसी लाइफ जमीन के समंदरों में जो हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स हैं वहां पे लाइफ पाई गई है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है कि ऐन मुमकिन है कि यहाँ पे लाइफ हो, और वो लाइफ जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हो जब ये मटेरियल समंदरों से होता हुआ इस आइस लेयर से होता हुआ बाहर स्पेस में आता है और हमारा स्पेसक्राफ्ट उसको डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे ब्रेक थ्रू रिसर्च की कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऑन द वेरी राइट साइड यू कैन सी दैट इट शोज कि एक हाइड्रोथर्मल सिस्टम है उस समंदर में जो उस मून के नीचे है, अंदर है, और वहां से वो इंग्रेडिएंट्स ट्रेवल करते हुए बाहर आते हैं। और ये हमने मुख्तलिफ तरह के इंग्रेडिएंट्स, जिनमें सॉल्ट है, जिनमें अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हम समझते हैं कि लाइफ से रिलेटेड हैं, वो वहां पे हमने डिटेक्ट किए हैं। जिनमें आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि ये मेरे पेपर में जो हमने फाइंड किया कि हमने अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स फाइंड किए। एक दूसरा जो नेचर में पेपर था उसमें हमने इतने बड़े मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए कि जिससे हमें पता चला कि इतने बड़े मॉलिक्यूल्स का वहां पे मौजूद होना इस बात का इंडिकेटर हो सकता है कि वहां पे लाइफ है। इतनी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री वहां पे और बायोकेमिस्ट्री वहां पे क्यों कर हो रही है। तो ये ब्रेक थ्रू रिसर्च थी। जस्ट आपकी क्यूरोसिटी के लिए ये बताना ज़रूरी है कि चूंकि एस्ट्रोबायोलॉजी को हम प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये जो ब्रेक थ्रू रिसर्च थी लाइफ को ढूंढने के लिए, ये ओवरऑल इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हमें मिली, हमारी रिसर्च को मिली। और अब नए मिशंस जो हैं इसके बारे में डिज़ाइन हो रहे हैं जो जाने के लिए। यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी आपको मैं दूं कि जैसे एनसेलेडस की बात की गई है, उसी तरह जुपिटर का मून यूरोपा है, जहां पे अब नासा एक मिशन भेज रहा है। ये एस्ट्रोबायोलॉजिकल मिशन है। इसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इंस्टॉल किया है जैसा इंस्ट्रूमेंट कैसिनी के ऊपर था, और इसकी टीम के अंदर शामिल हूं मैं इसकी एनालिसिस की। और आपके आपके पर्सपेक्टिव के लिए बताना जरूरी है कि यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये अर्थ है और ये यूरोपा है, वो मून। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि अर्थ का अगर सारे पानी को इकट्ठा करें तो इस डायामीटर का एक वॉल्यूम बनेगा, जबकि यूरोपा के ऊपर अगर आप उसके समंदर के पानी को इकट्ठा करें तो यू इमेजिन कि ये इतना वॉल्यूम है। तो ओवरऑल यूरोपा के ऊपर जो पानी का समंदर है उसके पानी की मिकदार पूरी जमीन के समंदरों के पानी की मिकदार से भी ज्यादा है, हालांकि यूरोपा का साइज छोटा है जमीन से। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि व्हेन देयर इज अ वाटर, व्हाई नॉट देयर इज अ लाइफ। तो इसलिए ये एक, और व्हेन देयर इज अ रॉकी कोर, जहां पे मिनरोलॉजी हो सकती है, जहां पे इंटरेक्शन हो सकती है, जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो सकते हैं, तो डेफिनेटली चांसेस आर मोर कि वहां पे either there is a life which is sustained there, or
देयर आर चांसेस कि लाइफ ओरिजिनेट होने के लिए वहां पे बायोकेमिस्ट्री जनरेट हो सकती है। तो इट मीन्स कि आप जस्ट इमेजिन करें कि जहां पर आपकी माइक्रोबियल या आपके लाइफ मौजूद है समंदरों में, और वो लाइफ आइसी क्रस्ट से होते हुए आइस ग्रेन की शक्ल में इन प्लूम से बाहर निकलती है, और जब बाहर निकलती है तो तब हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है उस लाइफ को डिटेक्ट कर सकता है। और इसके लिए एनसेलेडस एंड यूरोपा, ये दो मून्स जो हैं, ये इस वक्त एस्ट्रोबायोलॉजी की रिसर्च में, बिसाइड्स मार्स, is the one of some of the most potential bodies. तो इसलिए यहाँ पे इन दी एंड आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलके एक, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक इनिशिएटिव भी शुरू किया हुआ है एस्ट्रोबायोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए कि ये सब्जेक्ट जो है ये भी आप अपने करिकुलम में यूज कर सकते हैं, और ये इट्स अ काइंड ऑफ अप्लाइड थिंग जो कि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में, आईटी में, मैथमेटिक्स में सीखते हैं, और फिर यहाँ पे इसकी रिसर्च में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंड करूँगा अपनी डिस्कशन, एंड आई होप इतने थोड़े से टाइम में जो मेरे पास अभी अवेलेबल था मैं मैसेज कन्वे कर पाया। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dr. Nazair. That was very comprehensive and nice, and you touched on many parts. And I agree with you कि जी ये बिल्कुल एक एप्लीकेशन है जो केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी जी जो हम पढ़ते हैं अपने करिकुलम वगैरह में। तो we've just got a couple of questions, Dr. Saab, if you don't mind. I'll just put them up here. So Laiba Shah wants to know if there's any chance of life in Saturn. As you said, find life where there is water. जी बिल्कुल ऐसा है कि द चांसेस आर टू मच देयर। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर आपको लाइफ के लिए पानी रिक्वायर्ड है और एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड है। वहाँ पे लॉट ऑफ जनरेट हो रही है हीट उसके कोर में, और इट मीन्स कि आपको केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, और वहाँ पे हाइड्रोथर्मल सिस्टम है। अगर आप गूगल करें लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल सिस्टम जो कि जमीन पर है, एग्जैक्टली वो कंडीशंस जो हैं वो हमें एनसेलेडस पे मिलती हैं। तो यस, होप्स आर देयर। तो इसीलिए हम नासा के साथ मिलके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो अगला डिकेड है, जो अगले 2 डिकेड्स हैं, उनमें एनसेलेडस की तरफ ही स्पेस मिशन भेजने की प्लानिंग जो है या प्रपोजल्स जो हैं वो सबमिट हम करवा रहे हैं। Thank you, Ji. Next, we have a question from Bhazad. So, question for you, sir, is since Venus is a warm and rocky planet, why aren't we that focused to find life there than searching on other planets or moon? So, ये I know बड़ा अच्छा Mars की सवाल है, बहुत अच्छा सवाल जी है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि वीनस जो है, जिसको हम सिस्टर प्लैनेट भी कह सकते हैं अर्थ का, तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं है? आपको पता है कि एक तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत एक्सट्रीम है, वहां पे प्रेशर बहुत एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको डेफिनेटली शायद पता हो बहजाद, या अगर दूसरों को पता नहीं है, कि वहां पे प्रपोजल सबमिट किए गए हैं कि जो उसके क्लाउड्स हैं, कहा यह जा रहा है कि उनके क्लाउड्स के अंदर टेम्परेचर इतना है कि उसमें एक खास साइकिल चल रहा है, कि जिस साइकिल के नतीजे में माइक्रोब्स जो हैं वो हायर टेम्परेचर से, बिकॉज ऑफ द विंड फ्लो, वो नीचे हॉट क्लाउड से कोल्ड क्लाउड में जाते हैं, और फिर वो दोबारा से रिकंडेंस होके वापस नीचे आते हैं, और इस तरह से एक साइकिल बन रहा है वीनस के क्लाउड्स में। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन के आई थिंक डिस्कवरी जो प्रपोजल्स हैं इस साल जो एक्सेप्ट हुए हैं, वो वीनस की तरफ ही स्पेस मिशन भेज रहे हैं फर्दर उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो द वीनस क्लाउड्स आर द डेस्टिनेशन फॉर सर्चिंग लाइफ। बिल्कुल चांसेस हैं वहां पे। वेरी नाइस। Another similar question कि सिर्फ मार्स पे क्यों ज्यादा फोकस है और बाकी, that's उसकी also एक very similar वजह है, question. उसकी जी उसकी एक वजह है, और वो वजह यह है कि जब स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के स्टार्टिंग में हम अपने नियर मोस्ट प्लैनेट्स को ही ज्यादा डिस्कवर करेंगे, और उसमें जो मार्स था वो हमारे लिए एक बड़ा एस्टॉनिशिंग था। और जितने भी मॉडलर्स थे वो ये बताते थे हमें कि मार्स जो है वहां पर कभी लाइफ मौजूद थी,
बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इसलिए जैसे ही हमने स्टार्ट किया, यानी हमने से मुराद ये है साइंटिस्ट ने या नासा ने, तो वहां पे एक बात याद रखें कि बहुत बड़ी कम्युनिटी डेवलप हो गई मार्स की, और आप उनको बेरोजगार नहीं कर सकते हैं. बहुत एक्सपर्ट लोग वहां पे पैदा हो गए, तो डेफिनेटली आपको फिर क्या करना पड़ता है, कॉन्सिक्वेंटली आपको मिशंस वहां पे भेजने पड़ते हैं. इट्स अ पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिकल एंड ऑल दोज थिंग्स इन्वॉल्व. दैट्स व्हाई मार्स को बहुत हद तक जो है वो एक्सप्लोर किया गया और मजीद एक्सप्लोर किया जा रहा है. Sure, thank you. So Mavish wants to know कि astrobiology में future के hot topics क्या हैं in terms of research या जो लोग अपनी studies वगैरह करना चाहते हैं इसमें. जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में आप तीन तरह की चीजों को डिवाइड कर सकते हैं. नंबर एक, आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत मास्टर्स हैं, ठीक है, तो आप, इसका मतलब है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग थ्रू योर आईटी थिंग्स, आप आ सकते हैं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढने के लिए. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हो. दिस इज द वन. द सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, और वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में डेफिनेटली आप ओशन साइंसेस जो हैं वो इस वक्त बहुत इन है, कि चूंकि हमें पानी मिल गया हुआ है जमीन के अलावा कहीं पर, तो इसका मतलब है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्राइम ऑब्जेक्ट एंड टॉपिक टू लुक फॉर एस्ट्रोबायोलॉजी. एंड द थर्ड वन इज नाउ ह्यूमन कोलोनाइजेशन, कि एस्ट्रोबायोलॉजी में अब ह्यूमन कोलोनाइजेशन को जो है वो हम फील कर रहे हैं कि अपनी लाइफ टाइम में अगले 10-15 सालों में हम ये होता हुआ देखेंगे, इनिशियली ऑन मून एंड देन ऑन मार्स एज वेल प्रोबेबली. Great, thank you very much. एक और अरसलान का सवाल है, why don't we send tardigrades to other it's planets? it's the matter of ethics. मैटर ऑफ एथिक्स ये है, और मैटर ऑफ स्पेस स्पेस प्रोटेक्शन ये है कि ना सिर्फ हम यहां से जब जाएं वहां पर तो हम उनको कंटेमिनेट ना करें, बिल्कुल इसी तरीके से हम जब वहां से भी कुछ लेकर आए तो ऐसा ना हो कि हम कोई पेंडेमिक ले आए यहाँ पर अर्थ के ऊपर और अर्थ की फेट खत्म हो जाए. तो इसलिए जो माइक्रोब्स हैं, जो ये कंटेमिनेंट्स हैं, जब भी हम स्पेस मिशन भेजते हैं तो हम बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं. मैं कोई इन्वेस्टिगेटर हूँ, जो जापानी स्पेस मिशन है, एजेंसी है जाक्सा, वो एक मिशन भेज रही है जर्मन के साथ मिलके, और मैं जर्मन साइड से कोई इन्वेस्टिगेटर हूँ उसमें, और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ स्टडीज का कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा स्पेस में ना भेजें जो कंटेमिनेंट करे स्पेस को. तो इसलिए ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए टार्डीग्रेड्स को हम दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं भेज सकते हैं. Great. So thank you very much, Dr. Nozair, for your time today and promote astrobiology in Pakistan. I know it's also World Space Week, so you must be really busy with a lot of invitations from across. So thank you again for joining us. We'll be following this with some student lightning talks. You're more than welcome to stay if you like, but if you're busy, then we can understand. So Yeah. just quickly, there's another interesting question that, if you don't mind, we can take. जी जी. Gigi. So it is an interesting expedition. Is water the only vital factor for detecting life traces? Do you think that the other factors, including pH, temperature, etc., also matter? यस यस. यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूं कि मैं एक वर्ल्ड क्लास किस्म का एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रपोजल की प्लानिंग में हूँ, जिसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं लेबॉर्ट्री में जो ओशन मून्स हैं वो लेबॉर्ट्री में मैं बना सकूं. और उसके लिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पानी के अलावा पीएच, टेम्परेचर, इंग्रेडिएंट्स, हीट सोर्स, एनर्जी सोर्स, all sources are important, but the vital is your medium, and medium is as an analog to earth. जमीन से हमने एनालॉग लेना है ना, तो जमीन पर जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो हमें वाटर मिलता है और उसके बाद फिर दूसरी चीजें हैं. लेकिन आप देखें कि जब पीएच बहुत ज्यादा है, 12 और 13 पीएच के ऊपर भी लाइफ अवेलेबल है, वो हमने ढूंढी है, यानी जमीन के ऊपर. और इसी तरह अगर एसिडिक पीएच की तरफ भी चले जाएं, वहां पे भी आपको लाइफ मिलती है जमीन के ऊपर. तो इट मींस कि इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बट ऑफ कोर्स द वाटर इज द मोस्ट प्राइम. Great. Thank you very much.
Would you like to add any closing comments, Dr. Nazair, before we go to the student talks? बहुत शुक्रिया शराम खान, और बिल्कुल ऐसा है. आई थिंक द मोर कोलैबोरेशन शुड कम अप इन पाकिस्तान to promote this subject. As I reveal in my talk, it's not only the physics, chemistry, biology, but it's ethics as well. It's a social sciences. Many areas you can cover. और सिकॉस और आपकी लैब ये जो काम कर रही है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, it's really great. And I hope Behzad is aware of that. That we are bringing together many knots from Australia to Germany to UAE and in Pakistan, and we hope that we will bring these knots together to further enhance this astrobiology and planetary science research. And thanks a lot for invitation again. And I wish you a great success for this event. I Thank am you very afraid I much. have to leave. Thank you. Bye Sure, we then. can. All right. Thank you for joining us. Khudafis. Bye bye. All right. So that was Dr. Nuzair. He's world-renowned astrobiologist. He's won various awards as well. He was kind enough to join us. Now we have Mr. Bhazad Qureshi, who is an MPhil in biotechnology and genetic engineering. His research area falls under life on Mars and Mars colonization. He completed his Martian soil project as part of his master's thesis here at our lab in late 2020. And today he'll be sharing his research work with us. So, Behzad is on. Hello. Assalamualaikum. Walaikum salam. Welcome, Behzad. Thank you. Am I audible clearly? Yeah, we can hear you fine. Okay, I think we can start. Sure. So you can share your slides. Okay. Behzad is a graduate of Kohart University of Science and Technology, and he was a visiting student at our lab and spent a good part of 2020 with us. Yeah. Can you guys see my screen? Yeah. Do you want to scroll a bit so we see if it's changing? Yeah. Yeah, it's Can you good. see? Yeah, Okay. go back. Fine. Great. Assalamualaikum. My name is Bhazad Qureshi, and I have done my MPhil in biotechnology and genetic engineering from Kohart University. I did my research in astrobiology, particularly in Mars colonization and life on Mars, at Precision Medicine Lab. It was a collaboration between CCAUS, RMI, and Kohart University. Okay, so the title is of my research is Proliferation and Survival Analysis of Rhizosphere soil bacteria in Mars soil simulant under Martian conditions. My supervisor was Dr. Noor Mohammed, and my co-supervisor for this research was Dr. Faisal F. Khan, who helped me a lot in this research. Okay, so just to give you a brief background why I did this research and what I actually did in this research. So, as Sir Nozair explained really well about life in solar system and colonization of the solar system, maybe a colonization of space. So my interest was in Mars colonization and what form of life can we find on Mars, and or what microbes can we find on Mars. So Mars colonization is this big project that aims at landing on Mars and ultimately colonizing it for human benefits. And ultimately, the long goal of Mars colonization is terraforming Mars, to change Mars to a habitable planet, since it's not a habitable planet for humans right now. So different scientists are changing, are trying to change, or trying to make new technologies to change Mars into a habitable planet. What is my research, or what was my research actually? So we had two major things, to build and test a new Mars soil simulant, and to check the growth and survival of rhizosphere soil bacteria in Mars soil simulant under Martian conditions. So, if humans are going to Mars, they will need food,
and our food comes from primarily, directly or indirectly, from plants. So if you want to grow plants on Mars, you need some specific bacteria, which are called rhizosphere soil bacteria, that helps plants to grow and develop. So we are basically testing, or we tested to some extent, that can rhizosphere soil bacteria grow on Mars or not? Introduction. So why Mars? Since Mars is in close proximity, that is one of the reason, and there are some factors that makes Mars more suitable to colonize. The temperature range on Mars is minus 140 degrees centigrade to 30 degrees centigrade, which makes it really cold at night, but somehow habitable in the day. Pressure is 630 pascals, which is very less. The air on Mars is very thin. This is one issue for humans to colonize Mars. Another issue is carbon dioxide dominancy in the atmosphere, and some other factors, like 1 year on Mars is 680 days, 1 day on Mars is 24 hours and 7 minutes. There is a possibility of liquid water on Mars, but we surely know that there is ice on Mars. Since Dr. Nozad talked about it, habitable zone. So somehow, or to some extent, Mars actually is engulfed by habitable zone. It's not in the optimistic habitable zone, but it's in somehow in the habitable zone. This is one of the factors that makes Mars more suitable for colonization and for search of life. Rhizosphere bacteria helps in different things, in nitrogen fixation, in phosphorus solubilization, in pathogen protection, and phytohormones production. I'll go quickly through my presentation because the time is very constrained. These are some different Mars soil simulant that already has been made: JC Mars 1, Mojave Mars simulant, and Mars Global simulant. Mars Global simulant is the most accurate soil simulant, and JCC Mars 1 is the most used Mars soil simulant in researches. So the methodology of our research, we used randomized block design to design the whole experiment. So we made different blocks for different factors, and we made different groups based on these blocks. This is the sampling area from where I sampled the Mars soil simulant. It's near my city, which is Kohat. Okay, so the workflow was that we had three phases. One was to characterize the indigenous soil samples to see whether if we can use it as Mars soil simulant or not. The second phase was rhizosphere soil bacteria isolation, so that we can grow it in that soil simulant. And the third was actually the main part of the experiment: rhizosphere soil bacteria in Mars soil simulant. So we actually tested this, the growth of these bacteria in this simulant. So we did some statistical analysis also to verify the data. Then comes the results. So to analyze our soil simulant, we used two techniques majorly. One was X-ray diffraction, and the other was SEM-EDS. X-ray diffraction was used to check whether the mineralogical composition of that soil that we are using in this research is somehow similar to the actual Mars soil data. So you can see that on the left, these are the minerals found in Mars soil originally. This data was sent by Curiosity rover. On the right side, you can see the data of our soil simulant that we are developing. So calcite, quartz, hematite, magnetite, and clownite, these are the five minerals that we found in our simulant, which is in line with the original Mars soil data. These are the some graphs and data of scanning electron microscopy, SEM-EDS basically. This was used to check the elemental composition of our soil. I cannot go through all the elements, but I'll just tell you that
we had almost 76% similarity in terms of elemental composition with the original Mars soil data sent by Curiosity rover or Viking lander back in 1970s. We couldn't find two or three elements, which includes chromium and potassium oxide and phosphorus pentoxide. And we found one extra element in our soil simulant, and that was zinc oxide. This is how our Mars soil simulant looks, and we are calling it KP Mars 1, which stands for Khyber Pakhtunkhwa Mars soil 1. Okay, so the microbial data and microbial results are, so the workflow was that we took soil samples in Petri dishes and also in Falcon tubes, and we put 5 grams of Mars soil simulant in it, and then we add 3.5 ml broth plus 100 microliters of liquid culture of bacteria, and then this was incubated in Martian condition for 7 days. And I'll tell you what were the Martian conditions. So we individually tested each and every condition. First one was temperature. We are going with minus 20 degrees centigrade of temperature, but on Mars you can see a range of temperatures ranging up to minus 140 degrees centigrade on the pole and minus 80 to minus 96 degrees centigrade on the equator at night. But we are going with minus 20 degrees centigrade to have a baseline so that we have an idea that if bacteria can grow at this temperature or not, or even survive. So all of the three conditions were incubated for 7 days, and we had two groups. One was the blue group is the Earth group, um, in which the bacteria were kept in normal conditions, and on the in the red color data, this actually shows the Martian group in which we kept the bacteria in Martian conditions. So temperature in the Earth group, the temperature was plus 24 degrees centigrade, and in the Martian group, the temperature was negative 20 degrees centigrade. So, and on the day first, you can see that there is a significant decrease in the bacteria, uh, which indicates that a lot of bacteria were killed on the first day of incubation. And then on the day third, this is very interesting that you can see a rise in the number of bacteria in the Martian group. And on the day 7, you can see that again there is some sort of significant decrease in the growth. And in the Earth group, you can see there is a significant increase, which was obvious and anticipated. This is the plate that we, these are the bacteria actually that we extracted from the Martian conditions of temperature. And then we tested UVC conditions, same groups, same sets of experiment, but different results, obviously, because the factor was changed. So you can see again there's a significant growth in the Earth group, and in the Mars group there's a significant decrease actually. And the decrease is actually linear and it's going down and down till day 7, which tells us that UVC radiation is a harsh factor for the growth of bacteria or even survival. These are the bacteria that we extracted from UVC radiation conditions of Mars. And the last condition that we tested was CO2 dominancy in the Martian atmosphere. And this is the only condition where we can see a significant growth in the number of bacteria, even though more growth than in the Earth conditions. So you can see on the day 1, the exponential figure shows 10 raised to the power 11, and on the Earth group, it's 10 raised to the power 10. So in Martian conditions, the CO2 dominancy actually favors the growth of rhizosphere soil bacteria. And then we can see there's a static data. There is no significant growth after day 1, but it remains the same. So which makes us think that the survival is possible in CO2 dominancy for rhizosphere soil bacteria. This is the plate that we extracted from CO2 conditions.
And this is a radial diagram, more like a triangular diagram, in which I actually compiled all of the three factors just to give you guys an idea that which is the condition that is really harmful, and which one condition that actually favors the growth of bacteria. So radiation was the most lethal factor for the growth of or survival of the bacteria, and CO2 was the least lethal factor for the growth and survival of rhizosphere salt bacteria. Conclusion. So rhizosphere soil bacteria were able to survive in all of the Mars simulated conditions provided in the study during a period of 7 days. As we see that in the data, growth was only observed in CO2 atmosphere condition. And one of the conclusion that we can make out of this data is rhizosphere soil bacteria might adopt to Martian conditions and might be able to grow after some adaptation. These are my some of the references from my research, and these are some of the pictures during my time in the lab working on this project. I would like to acknowledge Dr. Noor Muhammad, Dr. Faisal F. Khan, Dr. Kevin M. Cannon, Dr. Yunus Nadeem, and Dr. Falak Naz, who all helped me in this research, and some big names like Kohut University, Precision Medicine Lab, CCOS University, Class Exolith Lab, NCBC, RMIN, and EGC for their support. This is my email. You can contact me for any help or any question. And I'm up for questions, Sharam. Great. Thank you very much for that, Behzad. So before we jump to the questions, I've got a question myself. So what were some of the challenges that you faced while conducting this study? Especially, have you got any suggestions कि wet lab में क्या-क्या तुमने challenges face किए और उसको तुमने कैसे overcome किया? Considering Okay. कि Pakistan has limited resources when it comes to wet lab studies. Yes, and this is a very nice question. मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, by the way. And this is one of the obvious questions. So obviously the biggest challenge was how to simulate the conditions. Since we are not that privileged, हमारे पास इतने funds नहीं होते हैं, but in the West ज़्यादा funds होते हैं, तो उनके पास sophisticated machines हैं जो कि actually Mars की conditions को simulate कर सकती है. So the biggest challenge was to hack these things and to create a novel way to simulate these conditions basically. And I had to read a lot and meet people and talk to a lot of people to have an idea to how to simulate these conditions. So the biggest challenge was basically this. And the other challenge I would like to share was since I was not a space guy that much, क्योंकि आई वाज फोकस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी, तो मैंने सिस्टमैटिक स्टडी सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की थी. तो द इनिशियल फेज वाज अ बिट टफ, और ये मैं यंगस्टर्स को एक सजेशन भी दूंगा कि स्टार्ट में आपको थोड़ा सा लगेगा कि चीज़ काफ़ी टफ है, क्योंकि आप नई टर्मिनोलॉजी से सीखेंगे, नया डाटा पढ़ेंगे, आपको नई चीज़ें काफ़ी मिलेंगी जब आप पेपर्स पढ़ोगे. लेकिन इवेंचुअली आप यूज्ड टू हो जाओगे and you'll start liking all these things. So these were some of the challenges जो कि मैंने face किए during my research. Cool. Thank you, Behzad. We also have another question from Afaq. So he wants to know, as a BS student, he wants to do his research in astrobiology. Is it possible कि पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो BS प्रोग्राम्स कराती हैं, या फिर इसको कोई सुपरवाइजर अपना जो एस्ट्रोबायोलॉजी में होगा उसके साथ बायोटेक में या कोई और डिग्री में थीसिस करना पड़ेगा? आप डेफिनेटली कर सकते हो BS लेवल पे एस्ट्रोबायो की रिसर्च. या तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वेट रिसर्च करोगे यूजिंग प्रैक्टिकल डाटा और जनरेटिंग प्रैक्टिकल डाटा, या आपके पास बैंको वाला रास्ता है. तो यू हैव टू चूज कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, एंड देन आप किसी भी सुपरवाइजर के साथ ये कर सकते हो. बेसिकली यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक सुपरवाइजर फॉर दिस, लेकिन जस्ट नीड to have the convincing power कि आप उनको convince कर सको कि you can actually pull this off, क्योंकि it's not a easy thing. आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा और आपको एक नया आईडी जनरेट करना पड़ेगा.
when you are reading all of this stuff. So you can definitely do this. I can help you out in finding a way or finding an idea if you don't have any idea at the moment. So feel free to reach out to me. Cool. Thank you very much for that, Bezad. We're really proud of you. You're doing great things in space outreach and awareness. Bezad was recently at a college in Kohart where he was doing outreach programs to young students and encouraging them to take up astrobiology. So thank you very much for joining us, Bezad. Thank you so much for having me, We, Saddam. we look forward to have you at the lab soon as well. So moving on to our next. So let's move on to our next lightning talk. This is Munif or Rahman. Munif is a bachelor student, and his research is at the intersections of synthetic biology and astrobiology. So Munif, thank you for joining us. Assalamu alaikum, everybody. Thank you for having me today. I'm today going to present my thesis research. I'm currently a BS student at CCOS University, and I'm doing this project in collaboration with the collaboration that exists between the Precision Medicine Lab and CCOS University. So I'm just going to share my screen now. Shanam, can you hear me? Yeah, we can hear you fine. Um, Please share your screen. Okay. Okay. Can you guys see the screen? No, we can't. Can't. How about now? Okay, yes. Okay. So, so now I'm going to present my thesis research. So basically, this page will give you a basic outline about my research and how we went through the whole process. So first of all, I'm going to introduce my project. So the title of my project was Deinococcus radiodurans as a chassis for synthetic biology experiments and in space biology. So I did this project with my supervisor Faisal F. Khan, and moving on. So the part of my project was a chassis. So I'm going to explain now in layman's terms what is a chassis. So a chassis is a synthetically engineered organism that is designed by a scientist to its own liking to perform different functions. Basically, its whole genome is reconstructed to perform multiple functions. So that can give you a basic idea of what is a chassis. So it is a synthetically engineered organism. Uh, so what we wanted to do with it was that we explored Deinococcus radiodurans, which was a polyextremophile bacterium. That means it can survive in different stress conditions like harsh temperatures and desiccation and pHs, and also we wanted to explore the potential of Deinococcus as a chassis. So what we did was, and also the third one was we wanted to know whether it has any applications in space biology or to colonize Mars. So our basic aims were two of them. So the first was to colonize Mars, and the second was to make some biomaterials. So I'm going to explain that further in the presentation. So moving on. So what was the purpose of our project? So the main purpose of our project was to explore whether Deinococcus radiodurans can perform as a chassis by studying its individual features that it possesses, like resistance to different conditions, and also by exploring its genes and the functions of those specific genes. So, what was our hypothesis? So our hypothesis was that as being an extremophile microbe, Deinococcus radiodurans can survive in different space conditions and can have multiple space biology and industrial applications. So next on, this is basically the process we followed throughout our research. So the first thing what we did was we identified different features that an optimal chassis has. Like ऐसी कौन सी like features है जो कि एक chassis के होने चाहिए कि वो इसको एक perfect chassis बनाए.
And the second one was we associated different relevant genes with those features. Like for example, if there is a general, it had Deinococcus eridurans has a general stress resistance. So what are the genes that are involved in those resistance? What are the genes that are playing important roles in that uh, extreme tolerance of Deinococcus eridurans? That makes it very interesting. So the third and fourth step in our research was identifying and comparing different genes and their expression levels in on the ground and in space. So, in layman's terms, you can say that which gene is most present in Deinococcus when it is on ground and when it is present in space. So the thing what we did was we use our software, that is a programming software, to compare the genes that we identified and a data set we picked from the literature. So we identified differentially expressed genes, and we identified what were their functions, what were the functions they were involved in. Okay. So moving on to the results section of my research. So the first thing we identified were the 18 chassis features that Deinococcus eridurans possesses. That means it is an optimal chassis, and we can use this and engineer this microbe in the lab, and we can test its application on the in Mars conditions and on various different other industrial applications. So second one was we identified 134 relevant genes that we associated with those features. This is basically simple. And the third one was 14. We identified 14 different differentially expressed genes that were primarily involved in stress resistance. That means, and we also did an enrichment analysis. That means that we wanted to know the functions of the gene of those genes, what were those genes involved in. So that was our last step. So basically, I'm going to explain here what differentially expressed means. Like those genes that were either expressing lower in ground based environments, and the genes that were expressing higher in the space environments, or vice versa. Yeah. So the next this basically shows the data chart, the features that we identified through comprehensive literature review, as you can see here. So basically, the primary conditions were the general stress resistance and oxidative stress resistance. So these features were more major in Deinococcus eridurans. That means it has more genes that are allocated to these specific categories. So the next one is the differential expression of our genes. So these graphs basically show that, well, these graphs don't show any differential expression because the values were set too high. So the general synopsis synopsis of our of these graphs is that we are comparing the genes that we identified, the 134 genes, with that data set that we extracted from the literature review. Yeah. So the main result of our research is this. So as you can see here, the red dots, yeah, these red dots basically show the differentially expressed genes, the genes that were either highly expressed in space or lower expressed in space, and vice versa on the ground. Yeah. So this basically is a pie chart that basically shows you the different percentages of genes that we identified. So basically, as you can see, 41% of the genes are involved in general stress resistance, and the other major part of Deinococcus eridurans is the oxidative stress resistance category that covers the 30% of those genes. The other categories are not that major, but they still play a vital role in its survival in space. So the thing I forgot to tell you about is that the data set we extracted, it was actually a study that was conducted in space on the International Space Station, outside the International Space Station. So they basically uh, cultured Deinococcus eridurans bacteria, and they
attach those bacteria into specific stations that were outside the International Space Station. So that basically means they were directly exposed to the space environment. And they did this experiment for almost three years. And they checked their survival and the genes that were expressed in Deinococcus bacteria throughout that period. So the next thing is basically a heat map that also shows the comparative expression. So as you can see, the red area shows the expression differentially expressed genes that had the most vital and major impact on Deinococcus' survival. This slide basically shows you the enrichment analysis and tells you what the genes we identified, what are those genes involved in. So the red area you can see as so these genes were most involved in stress resistance, and as you can see, responded in result of a different cellular stresses and physical stresses. So the green area, as you can see, is not much important because these are those genes that were most present and that had no similar functions to the stress resistance category. And the blue area shows you the antioxidant activity of those genes. That means like it shows you basically the antioxidant capability of Deinococcus radiodurans. So this is basically the main result of our research. So these are the 14 differentially expressed genes that we identified, and their consecutive different expression values. So as you can see, the red region. So these are those two genes that were the most differentially expressed in our data, and other this blue region and light blue region, as you can see, these are minor differentially expressed, and these 14 genes, they are all important, equally important. So the last thing, what we conclude from our research. So the first thing is that Deinococcus radians directed its most resources towards stress resistance. That means it didn't grow as well as it would have been on the ground, but all of its genes were directed towards stress resistance. It was fighting stress in that conditions. And second is that high tolerance. So the data that we was that I showed is significant, but the values are not that high enough. That means Deinococcus needs a more challenging situation than on the International Space Station. That means it was not challenged enough. The third conclusion from our research was the activation of antioxidant systems. That means there are different genes known as catalases and starvation proteins that were expressed in the Deinococcus radians when it was in space. That basically shows its antioxidant capability. So that was it about my research. Thank you. If anyone has any questions, feel free to ask. Thank you very much, Munif. That was really interesting. We'll now move on to. I don't think we have any questions. If you do, you can drop them in our comments, and Munif can get back to you. Yeah. Thanks. All right. Next, we have Kuruthalayan Dhanesh, who's also a BA student at Seacoast University, and she's been using the NASA Gene Labs data to conduct her study. So, welcome, Kuruth. Assalamu alaikum, Sharam. Thank you so much for having me for the talk. Am I audible clearly? Yeah. We can hear you fine. Okay. Thank you so much again, and welcome whoever is joining us today for the talk. And now I'm going to share my slides if that's okay. Sure.
I know we've gone a little overboard in terms of time, but it's not every day that you have such talks on astrobiology. The main idea here is to promote astrobiology and to let our audience, which includes students from different backgrounds, for them to know that there are other career choices as well apart from just medicine and traditional engineering and those sort of things. So that's the goal here. I know there are some questions that I haven't put up yet. So questions by Nadia and Saad. Okay, yes, Kuruth, we can see your slides. Research revolves around the concept of microgravity and how microgravity has its impacts on gene expression level when we talk about the neuronal development. Neuronal development means that how neurons or neurogenesis occur inside the human body. So I will start off with a brief introduction to space and what have been done by the scientists and the researchers in the past decades. So as we all know that space is a completely different environment as compared to Earth. And when astronauts and different cosmonauts travel to space, they have to face different harsh conditions of the space. So in the past decades, the scientists and the cosmonauts they were able to identify five main hazards of space which have impact on which have physiological as well as different cellular impacts when it comes to astronauts. So these five main hazards are the distance from the Earth, confinement that the space offers, hostile environment, radiation, and lastly, the effect of microgravity on them. So, the question is what is microgravity? So, microgravity basically you can say is a condition or a state in which gravity seems to be very small in such that the body having a mass is able to experience weightlessness and is also able to float. This is all because if I talk particularly about International Space Station, because the International Space Station is in a constant free fall, uh, and when a body or an object is in a constant free fall, the mass of the object or a body become negligible. So when the mass is negligible, the body or the person or the astronauts on ISS experience weightlessness and they are able to float. As you can see in the image of former astronaut Jessica Meir, who is under the influence of microgravity. So, as my work is related to network analysis, I'm gonna give a brief introduction to networks, the Twitter networks as well. Networks are basically the visual representation of visual representation between different entities. These entities are termed as nodes. In biology, these nodes are genes, proteins, or any disease, and the interaction between these nodes are termed as edges. These interaction can be protein to protein interaction, protein to gene interaction, or protein to disease association. Now, coming toward the aim and objectives of my study, what I was trying to achieve from my study uh, uh, are as follows. That I was trying to look that how microgravity has an impact on nervous system and how can we pave the way to fill the gap which have been created in the past decades in the field of space science research. Lastly, there were three main objectives we were trying to cover. That were the identification of potential data sets on which we can perform our study, identification of the common and unique genes that were involved in the neuronal development, and lastly, network analysis among those unique DEGs. DEGs basically mean differentially expressed genes, which Maniv has like explained you guys earlier. So this was the main flow of our work. We gone through literature and
we find out two studies and data sets from Gene Expression Omnibus, and as well as Gene Lab. We utilize those data sets using different programming tool and constructed the network. So, what were our findings? Starting with the data set which we obtained from Gene Expression Omnibus, Gene Expression Omnibus, we had the data set which was comprising of human embryonic stem cells that were able to differentiate themselves into neurons. As you can see in the right corner, I have given the four main stages in which they were differentiating, and at the very right you can see there's 60 common genes which we have identified among all these stages. So after the identification of common genes, we were looking out for the unique DEGs among within each stage. For that, we used the same data set and constructed volcano plots, which help us to filter out the common DEGs from the unique DEGs. The red dots at each stage shows the unique DEGs present at each stage. These plots were constructed between the control and the progressing stage. The control stage were considered as the first stage, as you can see in the label, which was HESC, human embryonic stem cells, and the progressing stage were neural initiation stage. Stage 2 was neural ectoderm, and stage 3 was mature neural cell derived. After that, after the volcano plotting, we were able to get a list of genes which were unique among those stages, and we were able to construct a Venn diagram which visually help us to know that what were those genes at individual stage. So now we have the genes from the ground study. We were trying to look that what what effect might those genes have if they were at space. So for that, we took a study from NASA Gene Lab. It was a study conducted at International Space Station, on which the mice brain were basically exposed to microgravity for 90 days, and they were observing the differential expression of genes on that. So we try to find the genes which we excluded from our ground study, and we searched them in this data set. And as you can see in the result, we were able to identify 9 genes at stage 1, and 11 genes at stage 2, and 35 genes at stage 3, which were common in both the study. After the identification of those unique DEGs within the two studies, we try to look for the expression values के किस तरह से स्पेस में और किस तरह से ज़मीन में फ़र्क क्या है एक्सप्रेशन में उन दोनों की, राइट. सो वी कंपेयर द एक्सप्रेशन ऑफ ईच स्टेजेस. जितने भी एक स्टेज में जो जीन थे, स्टेज 1 में जो जीन थे उनकी हमने एक्सप्रेशन कंपेयर की. स्टेज 2 में जो जीन्स थे हमने उसकी एक्सप्रेशन आपस में कंपेयर की. तो आपको क्लियरली विजिबल होगा. नाउ हियर द रेड ब्लॉक्स रिप्रेजेंट्स के उन जीन्स की डाउन रेगुलेशन हो रही है, एंड ग्रीन रिप्रेजेंट्स कि वो जीन्स जो है वो अप रेगुलेट कर रहे हैं. इफ़ यू सी इन द स्टेज 2, अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो अगर इफ़ यू गाइस कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉक्स ए एंड फॉक्स 2. बेसिकली दीज टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोजेनेसिस, यानी कि ये न्यूरॉन्स की बनाने में या उसके बनने में हेल्प करते हैं. तो जब इसको माइक्रोग्रेविटी का कोई एक्सपोजर नहीं था तो यू गाइस कैन सी के यहाँ पे ये हैप्पीली पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहे हैं, राइट. बट जब इसके ऊपर माइक्रोग्रेविटी का एक्सपोजर आता है तो व्हाट हैपन इज कि उसकी रेगुलेशन में चेंज आता है, एक्सप्रेशन में चेंज आता है कि यहाँ पे वो नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है इतना ज़्यादा, एंड जो फॉक्स ए है वो उसकी एक्सप्रेशन जो लेवल है वो डिक्रीज हो चुका है. तो दीज आर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आवर स्टडीज़. हमने ये एक्सप्रेशन जो कि कंपैरिजन है फॉर द 3 स्टेजेस परफॉर्म किए. अब हर एक पे जाना इट्स क्वाइट वेग. अभी
And lastly, we were trying to look at, is there any interaction among all these DEGs जो हमें मिले हैं दोनों स्टेजेस से, right? So we were lucky enough to find interactions among these unique DEGs. और रेड रिप्रेजेंट बेसिकली जो कि जीन्स हैं जो हमारे फर्स्ट स्टेज में हमें मिले, जो पर्पल रिप्रेजेंट जो हमें सेकंड स्टेज में मिले, एंड थर्ड ग्रीन रिप्रेजेंट जो हमें थर्ड स्टेज में मिले. तो दीज वर ऑल फाइंडिंग्स वी हैव राइट नाउ. इस स्टडी से हमें कंक्लूजन, हमारी कंक्लूजन क्या हम निकाल रहे हैं? बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यस, microgravity has its impact on gene expression level, or if we are aiming to go beyond Earth and do interplanetary missions, so it might have impacts on human health, or maybe शायद regulation में different और भी changes आ सकती हैं. And secondly, again, the understanding of how nervous system responds to uh, uh, और अडेप्ट किस तरह से वो अडेप्ट करेगा कि अगर हम इंटरप्लानिटरी डिफरेंट इंटरप्लानिटरी मिशंस कंडक्ट करते हैं फ्यूचर में. So yeah, this was all about my study and my research. These are my references. I'm really thankful for my team and people who have been on my back, especially Dr. Faisal Khan, who is my PI, and my mentor Miriam Shah, Abdus Salam, Arsalan Riaz, and Lada Shah, who has been a constant support throughout this research. Thank you for your attention. Feel free to reach out to me at any point. Yeah. Cool. Thank you very much, Kuruth. That was really interesting. Your work around microgravity and using NASA Gene Labs data. So this brings us to the end of our Astrobiology Symposium. Thank you everyone for joining us. The idea for this symposium was to share some of the work that the Precision Medicine Lab and Dr. Faisal Khan in particular is doing around astrobiology. I hope this will serve as a stepping stone to promote astrobiology in Pakistan. So thank you very much, guys, and there'll be more from us soon. Bye.